Click here to subscribe our channel. Do not forget to press the bell icon to get regular updates of free videos. ठीक है, we'll start with chapter number 15, imperfect competition in market. So far you have explained monopoly. Imperfect competition is mainly, in this chapter we are dealing with oligopoly. Just for the information, remember that oligopoly is characterized by presence of few sellers in market, more than one but not large in number. If market is competitive, then there are large number of sellers producing homogeneous product. If it is monopoly, one seller. If it is monopolistic, large number of sellers producing differentiated good. And if it is oligopoly, then it is characterized by few sellers. So oligo means few. If there will be exactly two sellers in market, then it will be called duopoly. So duopoly is an example of oligopoly. Most of the question में दो सेलर दिए जाएंगे, जितने भी प्रॉब्लम होंगे न्यूमेरिकल के अंदर उसमें दो सेलर होंगे. So just remember, oligopoly market is characterized by presence of few sellers. Don't quantify it, more than one but not large in number. Now what happens due to few sellers is that there will be greater level of interdependency. There will be greater level of interdependency in the market, and that interdependency is with respect to price, interdependency is with respect to output, interdependency could be with respect to their advertisement and so on. Interdependency का मतलब हो गया, if one firm will change the price, suppose Coke reduces the price, then it will have a significant impact on the sales of Pepsi. So there is greater level of interdependency among firms. और large number of seller होते हैं तो large number of seller में भी firm price को change करता है, but उस price के change का effect others पे होगा. But how many others are there? They are also large in number, so the impact on others get diffused. So the interdependency is less. Here the interdependency will be very high or very significant. So due to presence of few sellers, there will be greater level of interdependency as well as there will be greater level of uncertainty. And because of greater level of interdependency, we find that prices in this market tends to be rigid. Prices tends to be rigid. So usually we will find that in this type of market, prices tends to be rigid, and prices are rigid because of this simple logic. Firms always face a dilemma whether to increase the price or whether to reduce the price. Just for example, if Coke reduces the price, then what is the fear for Coke? Pepsi will reduce the price more, so it may start a price war. And if there will be a price war, the beneficiary will be the consumer, not the producer. So in that dilemma, firm do not reduce the price. What is the problem in increasing? Pepsi may not follow, so the market share of Coke will reduce in that condition. So in that dilemma, firm tend to keep their price fixed or unchanged. So in that way we say that prices are rigid. ऑल्दो प्राइस रिजिडिटी का एक मॉडल भी होता है, पॉल्सोजी मॉडल, बट वो आपके कंटेंट का पार्ट नहीं है. तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 15 में ओलिगोपोली के अंदर और भी कंटेंट होते हैं, बट इफ यू स्टिक टू द कंटेंट, देन टू एक्सप्लेन दैट इंटरडिपेंडेंसी related to price, output or advertisement, we have to study different models. And if prices are rigid, then what will be the basis of their competition? How Coke and Pepsi compete with each other? They are not competing on the basis of price. They are competing basically on the basis of non-price competition. Non-price competition means advertisement.
sales promotion. So there is greater level of or importance of, there will be importance of selling cost in oligopoly market or advertisement. ये इंफॉर्मेशन जस्ट रजिस्टर में नोट करके रखेंगे. कंटेंट एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है आपके कंटेंट के फॉर्म में. चैप्टर नंबर 15 बेसिकली स्टार्ट्स विथ कोऑर्डिनेट मॉडल. So basic mainly we have to deal with three models. One will be coordinate model, other will be Stekelberg model, third will be the Burton model. We have to deal basically interdependency, and in order to explain that in this chapter, one model will be coordinate model, where we will assume that both firms determine their output simultaneously. Both firms determine their output simultaneously. So in the coordinate model, firms are determining their output simultaneously. When we explained Burton model, in that Burton model both firms determine their price simultaneously. So that will be price competition. Coordinate model is quantity competition. Coordinate is quantity, Burton is price. And when you apply it in terms of Stekelberg is in fact first mover. First mover means one firm may set output first, then second firm will decide, or one firm may set price first, then second firm will decide. So there could be a Stekelberg quantity leader also, or there can be Stekelberg price leadership also. But price leadership, Burton is basically first mover. Both are not determining output together. One will set output first, then second will decide. And in the coordinate, both firm determine output simultaneously. इसको याद रखेंगे, गेम के अंदर भी अप्लाई होगा ये. गेम थ्योरी इज ऑल्सो बेसिकली मैथमेटिकल टेक्निक टू एक्सप्लेन व्हाट इंटरडिपेंडेंसी. वो मैथमेटिकल फॉर्म हो गया इंटरडिपेंडेंसी के लिए. और गेम के भी अलग अलग वर्जन होंगे. साइमल्टेनियस गेम है, सिक्वेंशियल गेम है. तो साइमल्टेनियस गेम में सेकंड प्लेयर की स्ट्रेटजी फर्स्ट प्लेयर को मालूम नहीं होती है, और सिक्वेंशियल में, सिक्वेंशियल के अंदर एक प्लेयर पहले मूव कर रहा है तो उसकी स्ट्रेटजी सेकंड प्लेयर को मालूम है. तो जब आप इसी कंसेप्ट को गेम के अंदर अप्लाई करते हैं तो वहां भी साइमल्टेनियस गेम और सिक्वेंशियल गेम आएगा. मेनली ये तीन पार्ट होंगे इस चैप्टर के अंदर. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी सम अदर एस्पेक्ट एज वेल, बट मेनली दिस चैप्टर डील्स विथ थ्री इंपॉर्टेंट मॉडल: कोऑर्डिनेट मॉडल, बर्टन मॉडल एंड स्टेकलबर्ग मॉडल. सो वन बाय वन if you want to write main points, you can write in this form. In coordinate model, both firms determine output simultaneously. Both firms determine their output together. Both firms, because most of the question will deal with duopoly. In Burton model, both firms determine price simultaneously. ठीक है, की पॉइंट पे रखेंगे, बिकॉज आपको उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट भी करना है. ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते समय कॉर्डिनेट मॉडल में विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी डिफरेंशिएट करोगे, और बर्टन मॉडल में विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस डिफरेंशिएट करना, बिकॉज यू हैव टू डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस, और यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी निकाल रहे हैं. एंड इन द स्टेकलबर्ग मॉडल, in the Stekelberg model it is first mover. So it could be Stekelberg quantity leader also, or it could be Stekelberg
price leader also. Stakeholder quantity leader or stakeholder price leader. So these are three important part. And in paper you will find all three in one question. एक सिंगल क्वेश्चन होगा, उसके अंदर ये तीनों पार्ट पूछे जा रहे होंगे. मतलब कोऑर्डिनेट मॉडल भी वही क्वेश्चन है, स्टेकलर मॉडल भी वही क्वेश्चन है, बॉटन मॉडल भी सेम क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल होगा ओनली. थर्ड मॉडल में सिक्वेंशियल होगा. जो लीडर होगा वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा, गिवन दैट फॉलोअर विल रिएक्ट. In coordinate model, when one firm determine its profit maximizing quantity, it assume that the output produced by the second firm remain constant. उसको constant मानते हुए हम differentiate कर लेंगे. Bottom model में when one firm decides price, it decides its own price, assuming that the price charged by the other firm remains constant. And here first mover जो होगा उसे follower का reaction मालूम है कि हाउ फॉलोअर इज गोइंग टू रिएक्ट. ये फर्स्ट मूवर लीडर हो गया. लीडर नो हाउ फॉलोअर इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड. ठीक है, वन बाय वन विल अप्लाई दैट कंसेप्ट. फर्स्ट एक्सप्लेन दिस कोऑर्डिनेट मॉडल. ठीक है, कोऑर्डिनेट मॉडल में भी इनफैक्ट देयर आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, टू इंपॉर्टेंट वर्जन यू कैन से. देयर इज एन ओरिजिनल वर्जन, वो ग्राफिकल है. ठीक है, वो ग्राफ के अंदर एक्सप्लेन कर लेंगे. एंड देयर इज अ रीसेंट वर्जन विच इज बेस्ड अपॉन अ रिएक्शन कर्व और नोन एज बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व, सिंपली BR कर्व भी कहते हैं. देयर विल बी एन ओरिजिनल फॉर्म एंड देयर विल बी अ रिएक्शन कर्व. Original form is basically based upon various simplified assumptions. The original form, it is based upon various simplified assumptions. Assumptions, you may take that cost is zero or you may take cost as positive. There are two firms in the market, both are producing identical product. Since both are producing identical product, they cannot charge different price. Prices कब different होते हैं? मतलब पेन का प्राइस डिफरेंट कब हो सकता है? जब ये पेन भी डिफरेंट हो. बट अगर दो फर्म आइडेंटिकल पेन बना रहे हैं तो द प्राइस विल रिमेन सेम, बिकॉज अगर अदरवाइज कोई भी एक लोअर चार्ज करेगा, एंटायर मार्केट विल गो टू दैट फर्म बिकॉज द प्रोडक्ट इज सेम. सो व्हेन प्रोडक्ट इज सेम, फर्म्स कैन नॉट चार्ज different price, but only when the products are differentiated, prices can be different as well. So we are assuming that in this coordinate model, firms are producing identical product, homogeneous product. एक graphical description में दे रहा हूँ, उसको आप अप्लाई करेंगे. न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो इसके बेसिस पे रिएक्शन करने. न्यूमेरिकल पूछते समय याद रखिएगा रिएक्शन कब का कंसेप्ट आएगा. बट पहले ये डायग्राम के फॉर्म में समझना. I am stating the assumptions here. For example, suppose both firms are producing homogeneous product and demand for the product in market is this straight line demand curve. If I say that cost is 0, you may take cost positive also, but suppose cost 0 है, तो कॉस्ट अगर 0 होगा तो कॉस्ट लाइन कौन सी हो गई? हॉरिजॉन्टल एक्सेस. इफ दिस इज द डिमांड कर्व, वेयर विल बी द मार्जिनल रेवेन्यू लाइन? अगर मैं ये डिमांड कर्व कह रहा हूं कि ये डिमांड कर्व है, तो डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी होती है? 1. और जब इलास्टिसिटी 1 होगी तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाएगा. ये रिलेशन याद है, MR इक्वल टू प्राइस इंटू 1 माइनस 1 अपॉन. तो जब आप इलास्टिसिटी 1 करोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू क्या होनी है? 0 हो जानी है. सपोज देयर इज ओनली वन फर्म इन मार्केट, फर्म 1. ठीक है, देयर इज नो सेकंड फर्म इन द मार्केट. सो इफ देयर इज ओनली वन फर्म, वी कैन से दैट दैट फर्म हैज मोनोपोली. दो में एक ही फर्म है अगर, तो उसकी मोनोपोली हो गई. हाउ मच क्वांटिटी मोनोपोलिस्ट विल प्रोड्यूस? वेयर इट्स ओन प्रॉफिट गेट
And what is profit maximizing condition? MR equal to, I am considering cost as, so marginal cost is 0 then. So when marginal cost is 0, then firm will produce that much quantity where marginal revenue is also 0. And marginal revenue will be 0 only when elasticity is 1. तो ये मिड पॉइंट हो गया, इस इंटरसेप्ट का भी ये हाफ हो जाएगा. So what happens that in first time period firm is producing how much quantity? Half of what? Total market का half उसने produce किया है. But firm is producing half of total market on the assumption that firm 2 is producing 0. This happens suppose in the first time period. ठीक है, ये हमने फर्स्ट टाइम पीरियड में ले लिया. टाइम पीरियड 1, half of total market produced by firm 1 on the assumption that firm 2 is producing 0. Now question is, what happens in the second time period? If firm 2 enters into the market, अगर firm 2 मार्केट में एंटर करता है, वो ये देखता है कि हाफ क्वांटिटी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हाउ मच इज लेफ्ट देन. तो अगर मैंने ये हाफ मान लिया कि फर्म 1 ने प्रोड्यूस किया, तो रिमेनिंग हाफ की वैल्यू ये हो जाएगी. तो सेकंड फर्म के लिए ये डिमांड कब हो गया, उस डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे दोबारा इलास्टिसिटी यहां बन जाएगी, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा. So how much quantity will be produced by the second firm? Second firm हम कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1/4 of the total, half of the half, but 1/4 of the. So if firm 1 is producing half, then how second firm reacts? By producing 1/4 of the total market. If firm 1 is producing half, then in the second period firm 2 reacts by producing 1/4. Now question is, what will happen in the subsequent period? Firm 1 was producing half of the total market on what assumption? Firm 2 was producing 0. Now how much output produced by firm 2? 1/4. So how much is left now? If 1/4 produced by firm 2, what is left? 3/4. जो भी लेफ्ट रह जाएगा उसका हाफ प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हाफ पे ही एमआर और एमसी इक्वेट होंगे. क्लियर है? इनिशियली फर्म 1 के पास टोटल मार्केट था, उसने हाफ प्रोड्यूस किया. सेकंड फर्म के पास हाफ था, उस हाफ का हाफ उसने प्रोड्यूस किया 1/4. तो वट एवर बी लेफ्ट, half of that will be produced. So how much quantity will be produced by firm 1 in subsequent period? 1/4 produced by firm 2. So what is left? 3/4. How much quantity? 3/8. ठीक है. अब 3/8 अगर firm 1 बना रहा है तो कितनी क्वांटिटी रहेगी? Remaining will be 5/8. और 3/8, हाँ, 3/4 is left. Half of that, 3/8. Clear? Initially how much was left total? 1. Half was produced. Half अगर firm 1 produce कर रहा है, then what is remaining? Half of half. 1/4 produced by firm 2. What is left? Half of that. 3/8 produced by firm 1. What is left? 3/8 produced by firm 1. So what is left? 5/8. So how much will be produced by firm 2? 5/16. So that process will continue. And at the end each firm will be producing 1/3 of the total market. वो प्रूव हो जाएगा इक्वेशन से भी. Just remember, at the end each firm will be producing 1/3 of the total market. So once they will reach that 1/3 and 1/3, both are doing their best given the strategy of the other player. So 1/3 and 1/3 ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है अलग अलग टाइम पीरियड में. At the end 1/3 quantity will be produced by firm 1, 1/3 quantity will be produced by firm 2. So what will be the total quantity produced? 2/3. मार्केट के अंदर जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी वो 2/3 होगी. कैन यू प्लॉट दैट 2/3 इन दिस डायग्राम? इस ग्राफ के अंदर 2/3 बना सकते हैं. ये मेरा टोटल क्वांटिटी हो गया, ये हाफ था, ये हाफ ऑफ हाफ है, तो ये एक्चुअल में 3/4 है. तो वेयर विल बी दैट 2/3? समवेयर इन बिटवीन. ठीक है, अगर ये 75% हो रहा है तो 2/3 विल बी समवेयर इन बिटवीन. अब मैं इसको ग्राफ के अंदर एक जगह मार्क कर रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंगली बताना कोऑर्डिनेट में कहाँ पॉइंट होगा
मोनोपोली में कौन सा पॉइंट हो गया, परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा पॉइंट होगा। मतलब मार्केट एक ही है, उसी मार्केट में अगर लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते तो क्या होता, सिंगल सेलर होगा तो क्या होगा, दो सेलर होंगे तो क्या होगा, दो फर्म कॉल्यूड करेंगे तो क्या होगा। यू आर स्टडिंग मार्केट फ्रॉम डिफरेंट एंगल, so we are studying this market from different perspective, that if in that market there would have been large number of sellers, then how much quantity they will produce and what price they will charge. If there are only two sellers, then how much quantity they produce and what price they will charge. If there will be only one, how much quantity that one firm will produce and what price that firm will charge. तो अगर दो सेलर हैं और कॉर्नर मॉडल होगा तो फाइनली कितनी क्वांटिटी आनी है, 1/3 and 1/3 इंडिविजुअली एंड 2/3 कलेक्टिवली। ठीक है, अब जरा फेयर डायग्राम पे ध्यान देना। This was the total market. If there is only one firm, then what will happen? Only one firm, MR equal to MC. तो अगर only one firm है, मतलब let us say only firm one है, तो how much quantity was produced? Half. So can we say that this is the quantity produced in monopoly condition? And if that is the quantity produced in monopoly condition, this will be the price charged by monopolist. Clear? If this market would have been competitive, then large number of seller होते, तो competitive condition में solution क्या होता है? What happens under perfect competition? Under perfect competition, remember, price will be equal to marginal cost. And how much is marginal cost? We are assuming 0. So where price is 0 then? किस क्वांटिटी पे प्राइस 0 होगा? यस, कॉर्नर पे हो जाएगा। So this will be the quantity produced under perfect competition, and price charge under competition will be 0 because marginal cost is 0. Clear? What happens when there are two firms behaving on the basis of corner assumption? टू फर्म में कितने होंगे क्वांटिटी? मोनोपोली में 1 था तो 1 में ये हाफ हो गया, कॉम्पिटिटिव में लार्ज नंबर ऑफ फर्म हो गए तो क्वांटिटी ये हो गई। और अगर दो फर्म हुए तो 1/3 वन फर्म, 1/3 अदर फर्म, टोटल क्वांटिटी 2/3. So here is that 2/3. 2/3 will be somewhere in between. That means this is monopoly and this is competition. So coordinate model is somewhere in between monopoly and perfect competition. It is a case in between monopoly and perfect competition. In between इस तरह होगा, हाँ उस तरह ये approximately 2/3 की वैल्यू इधर आ जाएगी. So this will be the total quantity produced in which condition? Coordinate. So you can specify that. And they will be charging this price. So remember, the quantity produced in the coordinate model is greater than the quantity produced in monopoly, but it is less than the quantity produced under perfect competition. Under perfect competition. ठीक है? अगर क्वेश्चन में कभी ये कहा जाता है कि कोऑर्डिनेट मॉडल में फर्म्स कॉल्यूड कर गए, बिकॉज आपको पढ़ना ओलिगोपोली है, इन द कोऑर्डिनेट मॉडल फर्म्स आर कॉल्यूडिंग. कॉल्यूजन मीन्स दो फर्म थे कॉल्यूड कर गए. कॉल्यूजन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कार्टेल. सो इफ टू फर्म्स कॉल्यूड then they will try to maximize their combined profit. तो अगर हम दो ही फर्म ले रहे हैं और दोनों फर्म कॉल्यूड हो गए, लेट अस से दो फर्म मर्ज हो गए, तो मार्केट का कंडीशन क्या होगा? अगर दो फर्म मार्केट में मर्ज हो गए तो कंडीशन क्या हो गया? एक ही फर्म रह गया, फिर तो मोनोपोली होगी. और मोनोपोली की क्वांटिटी कितनी है?
हाफ एंड व्हाट इज प्राइस। तो ये जो मोनोपोली सॉल्यूशन आ रहा है यही कंडीशन आ जाएगा परफेक्ट कार्टेल के अंदर भी। If market is characterized by two firms, but if they prefer to collude rather than compete with each other, then the outcome will be equal to monopoly outcome, because monopoly outcome is supposed to be the best outcome from producer angle point of view. Clear? अब ये डायग्राम जो मैंने यहां ड्रॉ कर रखा है इसमें मैंने कॉस्ट 0 लिया है, यहां पे कॉस्ट 0 ले रखा है। बुक में जो डायग्राम ड्रॉन है उसमें मार्जिनल कॉस्ट इज सम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसलिए मैं दोनों ही केस शो कर दे रहा हूं। इन केस ये डिमांड कब हो गया और मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज दिस मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इस केस में ये कॉस्ट यहाँ पे 0 है। इस डायग्राम में ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, दिस एक्सेस इटसेल्फ इज एमसी, बट नाउ आई एम टेकिंग एमसी हियर। कांस्टेंट है, हाँ इधर भी कांस्टेंट है बट वो पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ कांस्टेंट है 0 पे। तो बताना इस डायग्राम में ये सारी चीजें किधर आएंगी। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो P इक्वल टू MC करेंगे, ये क्वांटिटी हो जाएगी, ये QC हो गया ये वाली वैल्यू, और ये PC हो गया। इफ इट इज मोनोपोली देन MR इक्वल टू MC। If this is a demand curve, corresponding to that demand curve, I will draw marginal revenue just in this case. Intersection of that MR and MC will determine monopoly quantity. This is monopoly quantity, and price will be decided from the demand curve, monopoly. And always remember, coordinate solution is between. ठीक है, वो बिटवीन आएगा, और बिटवीन में भी एग्जैक्टली एक सिंपल रिलेशन होता है। जितनी भी क्वांटिटी परफेक्ट कंपटीशन की प्रोड्यूस होगी, परफेक्ट कंपटीशन में जितनी भी क्वांटिटी आएगी, 2/3 ऑफ दैट, ठीक है, मतलब 1/3 इंडिविजुअल होगा और 2/3 कलेक्टिवली होगा। वट एवर बी द क्वांटिटी प्रोड्यूस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, 2/3 ऑफ दैट विल बी प्रोड्यूस्ड. So 2/3 of that will be somewhere here. This will be price in coordinate model, and this is quantity in the coordinate model. ठीक है, ये डायग्राम ये पेज नंबर 478 पे होगा। यहाँ पे MC कांस्टेंट लेकर के डायग्राम बना गया। ओल्ड एडिशन वगैरह में कहीं के MC 0 भी है, तो मैंने दोनों के हिसाब होता है। अगर MC 0 होगा तो ये लाइन एक्स एक्सिस से कॉन्साइड हो रहा है, और पॉजिटिव होगा तो ये लाइन। ये परफेक्ट कंपटीशन की क्वांटिटी हो गई, ये मोनोपोली की क्वांटिटी हो गई, और 2/3 वाली वैल्यू ये कोऑर्डिनेट मॉडल है। ठीक है, ये AR है, डिमांड का AR, और ये MR है, डिमांड का बेस AR। ठीक है, डन। बट सिंस द नेचर ऑफ क्वेश्चन इज बेसिकली कैलकुलेशन, so rarely you will be required to use this type of graphical description. You have to mainly calculate it. You have to calculate it numerically. So now I am explaining the calculation process. We can prove it. We will prove it. ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जांपल से प्रूव होगा, और एक प्रॉपर प्रूफ भी है एग्जांपल में। We'll prove that. So now we can start with numerical calculation. Remember, in this diagram you have to learn only one thing. When
one firm maximizes its own profit, it assumes that the output produced by the other firm remains constant. It assumes that the output produced by the other firm remains constant. Now based upon that, we have to apply that coordinate model. And in that coordinate model solution, now we are following a reaction curve approach. A reaction curve is also known as best response curve, and definition of best response curve you can write, and according to that you have to calculate best response equation. Define this best response first. Best response curve shows profit maximizing quantity produced by a firm for a given quantity produced by other firm, मतलब आपको एग्जाम्पल में क्या होगा, इस तरीके का डिमांड फंक्शन दिया जाएगा. Like suppose if I say demand function is P is equal to A minus Q, where Q is Q1 plus Q2, and Q1 plus Q2 का मतलब we are considering that market is duopoly in nature, there are two firms. ठीक है. तो अगर प्रॉफिट फर्म वन का कैलकुलेट करना होगा तो क्या लिखें, पाई फॉर प्रॉफिट, फर्म वन का प्रॉफिट लिख रहे हैं. सो फॉर प्रॉफिट यू विल राइट टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म वन माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म वन. हाउ टू फाइंड टोटल रेवेन्यू? प्राइस, बट रिमेंबर प्राइस कैन नॉट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट फर्म बिकॉज प्रोडक्ट इज सेम, तो पी तो सेम ही रहना है, बट पी इंटू क्वांटिटी and this total cost, अगर जीरो है तो वहां जीरो लिख दीजिएगा. और अगर मैंने कोई कांस्टेंट नंबर लेके लिखा हुआ है, सपोज क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट 2 है, तो फिर यहाँ टोटल कॉस्ट में क्या लिखोगे, 2 इंटू क्वांटिटी, तो फिर मैं यहाँ पे 2 इंटू क्वांटिटी लिख दूंगा. ठीक है. तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू Q1. इन प्लेस ऑफ प्राइस व्हाट यू विल राइट, ये रिलेशन है. So in place of price I will write A minus Q, and in place of Q what you will write? In place of Q what you will write? Q1 plus Q2. So it is A minus Q1 plus Q2 into Q1 minus 2Q1. This is profit of firm 1. Then अब क्या करना है इसके आगे, हर फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा, but profit of firm 1 depends upon the quantity produced by firm 2 also, but each firm know how you have defined that best response curve. Best response curve shows what? Profit maximizing quantity produced by one firm for a given quantity produced by the other firm. So you have to differentiate that function with respect to Q1 keeping Q2 constant and equate it to 0. ठीक है. From there you will get an equation, and you will get that equation in terms of Q1 and Q2. उस Q1 और Q2 के टर्म में जो इक्वेशन आएगा उसको आप ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दीजिएगा, एक्सेस पे यहाँ Q1 और यहाँ Q2 लिखते हुए. You will get basically a relationship, and you have to plot that relationship, and that relationship will be referred as best response of firm 1. वो फर्म 1 का बेस्ट रिस्पॉन्स कब आएगा. सिमिलरली व्हाट यू विल डू,
वो एक रिलेशनशिप है, वहां से कोई वैल्यू नहीं आई अभी। Q1 Q2 के टर्म में यू विल गेट एन इक्वेशन। सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ फर्म 2, so that will be total revenue minus total cost of firm 2. This profit has to be maximized with respect to Q2, keeping Q1 constant and equate it to 0. You will get second relationship. Plot that second relationship also. The intersection of these two reaction curve or response curve will determine the quantity produced by firm 1 and quantity produced by firm 2, and that will be the overall solution. So once you know that Q1 and Q2, add that Q1 and Q2 to get Q and then put that Q here to get price. ठीक है, आपको क्या करना है एक्चुअल में, प्रॉफिट का इक्वेशन लिखना है फर्म 1 का और फर्म 2 का, और प्रॉफिट के फंक्शन को क्या कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट कर लेंगे। Q1 के रेस्पेक्ट में कीपिंग Q2 कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू Q2 कीपिंग Q1 कांस्टेंट। This is the monopoly quantity we get. This will be basically the duopoly quantity you are getting. No. अब तो फर्म एक ही हो गया ना, वो दो के एक कैसे हो गए, दो फर्म है, Q1 and Q2 है, and they are not colluding. It is duopoly solution. what it is value, why and How I? What will happen if they collude? What will happen if there is perfect competition? There will be many cases. Like you can apply one example from previous year question. Done. Right, solve directly from previous year question. ठीक है, वहां से अप्लाई हो जाएगा। Year is 2014, question number 7th A part. I read this question. Consider an industry with two producers 1 and 2 and having an inverse demand function P equal to 250 minus 2Q. Clear? A की जगह 250 आ गया, यहाँ Q है. Where P is industry price and Q the total quantity that industry produce. So Q is Q1 plus Q2. Each producer has a constant marginal cost of 10. So copy this demand function and marginal cost of 10. What will be equilibrium price and quantity if both firms act as cornered competitor, and then if they form a perfect cartel? Cartel मतलब collude हो गया. Collude करके they are not maximizing their individual profit, they are maximizing their joint profit. But first apply this corner, and then deadweight loss can also be. So function was P is equal to 250 minus 2Q, and marginal cost of production is 10. MC की वैल्यू 10 है. इजी है क्वेश्चन. आप प्रेजेंटेशन में कॉर्नर मॉडल वहां लिख करके directly write down profit of firm 1 pi 1. So pi 1 will be equal to total revenue minus total cost. In place of total revenue write P into Q1, and in place of total cost, since MC is 10, so it will be 10 Q1. pi 1 is this. ठीक है, P की जगह आप फंक्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे. In place of P write down 250 minus 2 and Q की जगह Q1 plus Q2 into Q1 minus 10 Q1. इस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, रेस्ट इज इजी. Pi 1 is now 250 into Q1
minus 2q1 square minus 2q1 into q2 minus 10q1. Differentiate that function with respect to q1 keeping q2 constant. So this is 250 minus 4q1 minus 2q2 minus 10 equal to 0. Solve it for q1. So 4q1 is equal to 250 minus 10 is 240. 240 minus 2q2. Therefore q1 is equal to 60 minus 2 by 4 is 0.5 q2. Clear? Any problem? This is your equation number 1. इसको कह रहे हैं बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व, रिएक्शन कर्व इसको कहा जाता है. Why it is called reaction curve? The reason is this: if you plot this relationship by marking here q1 and q2, how to plot it? If q2 is 0, then how much quantity will be produced by firm 1? पहले एक स्टेप समझ लेना है, वही पूरी चैप्टर में चलना भी. If q2 is 0, that means firm 1 assumes that second firm is producing 0, then how much quantity firm 1 will produce? 60. So if q2 will be 0, then q1 will be 60. q2 0, q1 की वैल्यू यहाँ 60 मार्क करना. ठीक है. Now if q2 is 120, then if q2 is 120, if firm 1 assumes that firm 2 is producing 120, then how much quantity firm 1 will produce? 0. So if q2 will be 120, then q1 will be 0. तो 120 का पॉइंट यहाँ लिखेंगे 0. दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इंटरसेप्ट मार्क करने के बाद उसे स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दीजिए. दिस इज बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फर्म 1. ठीक है. हाउ टू रीड दैट डायग्राम? ग्राफ को कैसे रीड करते हैं? उसमें रीड करने का तरीका ये होता है, फॉर एनी गिवन क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय फर्म 2, हाउ फर्म 1 विल रिएक्ट. सो इफ फर्म 2 प्रोड्यूसेस 120, फर्म 1 विल रिएक्ट बाय प्रोड्यूसिंग 0. इफ फर्म 2 प्रोड्यूसेस 0, फर्म 1 विल रिएक्ट बाय प्रोड्यूसिंग 60. इफ फर्म 2 प्रोड्यूसेस लेट अस से 100, तो 100 की वैल्यू यहां लिख देंगे. हाउ फर्म 1 विल रिएक्ट वो इस इक्वेशन से निकालेंगे. ठीक है. वो सारी प्लॉटिंग है वहां पे वो. सो देयरफॉर दैट कर्व इज कॉल्ड रिएक्शन कर्व और बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व. बेस्ट रिस्पॉन्स बिकॉज इट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग रिस्पॉन्स. सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर फर्म 2. अब देखो पेपर में ड्रॉ करते समय आप पूरा प्रोसेस दिखाइएगा, बट सिंस आई एम टेकिंग सेम डिमांड इक्वेशन एंड सेम कॉस्ट फंक्शन, तो हमारा फाइनल इक्वेशन भी क्या आएगा? सेम आएगा. तो अगर टाइम सेव करना हो तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट बेटर वे विल बी टू जस्ट शो इट. तो जैसे पाई 1 निकाला वैसे क्या करेंगे? पाई 2 करेंगे, बट लास्ट इक्वेशन मेरा सेम आएगा. सेम आएगा, बट यहाँ q2 लिखे होगा और यहाँ पे रीजन कॉस्ट सेम लिया है, डिमांड फंक्शन भी सेम लिया है, तो इक्वेशन भी तो सेम ही आएगा. बना प्लॉट करते हैं अभी. ये q2 विल बी इक्वल टू 60 माइनस 0.5 q1 हो गया. अब प्लॉट करने से ये सेकंड इक्वेशन हो गया. नाउ हाउ टू प्लॉट दिस एंड हाउ टू रीड दिस. ये किसका रिएक्शन कर्व है? सो बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड फर्म विल रिप्रेजेंट व्हाट? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड फर्म फॉर एनी गिवन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय द first firm. So if first firm produces 0, then if first firm produces 0, q1 will be 0, then q2 will be 60. Overlap नहीं करेगा वो. This will be as 60. And if first firm produces 120, then second firm will react by producing 0. तो अगर यहाँ पे 120 का पॉइंट लिखिएगा तो ये 0 हो जाएगा.
60 और 120 ये पॉइंट आएंगे इधर. That will be best response of second firm. You have two equation and two unknown. Solve करके solution बताना. Therefore, how much is Q1 and how much is Q2? दो इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू. इस Q2 की जगह आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, Q1 की वैल्यू आ जाएगी. कैलकुलेट करके बताओ. और वही आंसर है. How much? Q1 and Q2. ठीक है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बिकॉज अगर हमने वैल्यू गलत लिखा है तो बाकी आंसर भी गलत आ जाएंगे. सो हाउ मच कंफर्म Q1 and Q2? Q is 72. सेम आएगी वैल्यू Q1 Q2. Q1 24 है, Q2 की 48. Q1 24. 24 and Q2? 48. No, it should be same. It should be same. 40. Q1 48. ओके, आपका सिंपल है. ये वैल्यू आपको यहाँ लिखनी थी, तो ये ब्रैकेट में नंबर हो गया 60 माइनस 0.5 Q. ठीक है. So I'm writing this number now, 40 Q1 and 40 Q2. So how much is the total quantity then? 80. If total quantity is 80, then what will be price? Total quantity is 80, so here you can write 80. 160, 250 minus 160 will be 90. Clear? So how much will be their individual profit, pi 1 and pi 2? ठीक है, अब आपको रिलेशन से में पुट कर देना. नाउ यू नो प्राइस, यू नो क्वांटिटी, यू नो कॉस्ट. सो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू व्हाट? प्राइस इज 90, क्वांटिटी प्रोड्यूस इज 40. ठीक है, फर्म 1 के लिए 40 माइनस हाउ मच इज टोटल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट वाज 10, सो इट वाज 10 into 40. तो 3600 माइनस 400, 3200. 3200 is profit for firm 1, and similarly 3200 will be profit for firm 2. So how much is the total profit? 6400. Question is it highest profit combined also?
हमने इंडिविजुअली मैक्सिमाइज किया है, ज्वाइंटली मैक्सिमाइज नहीं किया है. Individual maximization, remember this is 3200, 3200, 6400 combined. Now the second part of the question says that if they form a perfect cartel, so if they form a cartel, then how you will solve it? If they join and they try to maximize their combined profit, then it is pi 1 plus pi 2 that they want to maximize, not only pi 1. But simple way is, if two firms making a cartel, it means they are forming basically a monopoly. So you can solve according to the monopoly question under perfect cartel. So just remember this outcome. ये clear है? Intersection point की value ये 40 और 40 है. And this is also called as coordinate Nash equilibrium. This is also referred as coordinate Nash equilibrium. ठीक है, ये गेम थ्योरी के अंदर अप्लाई होगा. Nash equilibrium. Nash equilibrium का मतलब होता है there is a set of strategy where both are doing their best. So what is the set of strategy here? What is the set of quantity they are producing? If they are producing 40 each, then no one will prefer to change from that quantity. No one will prefer to deviate from that quantity. In that way you call it Nash equilibrium. Nash equilibrium in that sense. अब इसको सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करिएगा. देखिए ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये पार्ट जितने सॉल्व करने थे, आपसे प्राइस पूछा गया था, व्हाट विल बी द प्राइस एंड क्वांटिटी एंड प्रॉफिट अंडर कोऑर्डिनेट, फिर परफेक्ट कार्टेल है, फिर डेड वेट लॉस बताना है, और सबका वेटेज ओनली 5 मार्क्स होता है. मतलब पेपर लेंदी होता है, बहुत सारे सब पार्ट्सों के क्वेश्चन है. नाउ सॉल्व इट फॉर परफेक्ट कार्टेल. सेम क्वेश्चन फॉर perfect cartel. You can say it is a collusive oligopoly also, or collusive solution. So P was equal to 250 minus 2Q and marginal cost was 10. So now you can simply calculate total revenue. P into Q कर लेंगे directly. 250 minus 2Q into Q. So 250Q minus 2Q square. From there you can calculate MR. 250 minus 4Q. And just equate that MR with MC. 250 minus 4Q is equal to 10. Therefore 4Q will be equal to how much? 240. So quantity will be equal to 60. How is MR 250 minus 4Q? डिफरेंशिएट करो. 250Q को डिफरेंशिएट किया आपने. TR differentiated to calculate MR. MR equal to MC. So quantity will be 60. Now if quantity will be 60, then what is price? Demand function is given. P की वैल्यू यहाँ पुट कर, क्वांटिटी यहाँ पुट करना 60. ये 120 और 250 minus 120 will be 130. Clear? So how much is total revenue? 130 into 60, 13 into 6. Minus total costs, that will be 10 into 60. And difference of these two will be profit. Difference of these two will be profit. ठीक है. So this much is 98, 9800, and this is 600. So how much is the profit? Revenue minus cost. 90, 78, 7800 and 600, 7200. And how much was the profit earlier combined? 64. So this is higher. If they collude, they achieve higher profit. नहीं ग्राफ नहीं करना. ग्राफ करेंगे तो मोनोपोली सॉल्यूशन आ जाएगा. ये मोनोपोली सॉल्यूशन है.
ग्राफ में जो स्टार्ट बनाया ना उसमें ये सारी मार्किंग हुई। तो उसमें ये आएगा फिर से। हाँ यहाँ पे आएगा। यह माला, और जहाँ पे एमसी को और एमआर इक्वेट किया था, जहाँ एमसी एमआर इक्वेट किया था वो वैल्यू है। तो ये पॉइंट मतलब क्वांटिटी देखे तो क्वांटिटी जैसे इस एग्जांपल को मैं उस डायग्राम में अगर प्लॉट करूं, क्योंकि एमसी कांस्टेंट गिवन है, तो एमसी अगर कांस्टेंट गिवन है तो मैं इसको, सारे आंसर याद हैं, तो सारे आंसर अगर याद हैं तो आप उस प्रीवियस डायग्राम में इसको प्लॉट करके बताओ कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। ये डायग्राम होगा, ये अप्लाई करना। एमसी की वैल्यू हो गई 10। परफेक्ट कार्टेल का मतलब ये मोनोपोली वाला होगा। सो हाउ मच क्वांटिटी? 60। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये वैल्यू हो गई 60। प्राइस कितना आया? 130 ये प्राइस हो गया। ये कोऑर्डिनेट मॉडल में क्वांटिटी कितनी आई थी? 40। ठीक है, तो ये नंबर यहाँ पे 80। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट मॉडल की जो क्वांटिटी है वो है 80, और कोऑर्डिनेट मॉडल का प्राइस क्या आया था? कोऑर्डिनेट मॉडल प्राइस 90। ठीक है, स्टेप क्लियर हो रहा है क्या? जो आप कर रहे हो अप्लाई कर रहे हो। अगर परफेक्ट कंपटीशन हो तो क्या होगा? तो ये एमसी, ये पी इक्वल टू एमसी वाला केस हो जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन होगा तो ये वाली क्वांटिटी पी इक्वल टू एमसी कर दोगे, तो पी इक्वल टू 250 माइनस 2 क्यू गिवन है, उसको एमसी से क्या करना है? इक्वेट कर देंगे, वहां से क्वांटिटी आ जाएगी। सर और मोनोपोली प्रॉफिट रीजन कौन सा होगा? मोनोपोली दिस प्रॉफिट रीजन कौन सा होगा? रीजन नहीं मार्क कर रहे यहाँ पे। रीजन अगर आप मार्क करते हो तो ये पी इंटू क्यू टोटल रेवेन्यू हो गया, ये कॉस्ट हो गया, ये वाला एरिया हो जाएगा। एंड फॉर दिस वन कोऑर्डिनेट के लिए कौन सा होगा? कोऑर्डिनेट के लिए ये वाली प्राइस हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। कंपटीशन के लिए परफेक्ट कंपटीशन में पी इक्वल टू एमसी, देयर विल बी नो एरिया ऑफ प्रॉफिट। डेड वेट लॉस आएगा यहाँ पे। डेड वेट लॉस को तो हम कंपेयर करते हैं हमेशा परफेक्ट कंपटीशन से। डेड वेट लॉस को जब आप कंपेयर करोगे, लेट्स से इफ यू आर यूजिंग दिस क्वेश्चन फॉर कैलकुलेटिंग डेड वेट लॉस, बिकॉज ऑल्सो कैलकुलेट डेड वेट लॉस इन बोथ केस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन बी अप्लाई फॉर्मूला ऑफ डेड वेट लॉस हियर? इस क्वेश्चन में डेड वेट लॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? फॉर्मूला कब अप्लाई होता था? जब मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे एमसी कांस्टेंट गिवन है, यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला। सो डेड वेट लॉस, हाउ टू यूज दैट फॉर्मूला? हाफ इंटू डिफरेंस इन क्वांटिटी इंटू डिफरेंस ऑफ प्राइस। और कौन से दो डिफरेंस लेने? एक तो परफेक्ट कंपटीशन वाला और एक मोनोपोली वाला। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं इस थर्ड पार्ट के लिए, अब जरा टाइम आप देखो कि कितना टाइम आपको उस 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए वहां लगना है। मतलब वहां पे सोचना नहीं है, सोचने का स्कोप नहीं है कि आप बस पता होना चाहिए कि ये कर रहे हैं, तो फिर टाइम नहीं लगेगा। अदरवाइज अगर आप वहां बैठ के सोच रहे हो कि इसमें क्या करना है, फिर क्वेश्चन छूट जाएगा। माइक्रो के अंदर ये प्रॉब्लम है, सब पार्ट्स क्वेश्चन में कई सारे होते हैं। तो इफ आई एम सॉल्विंग दैट सेम क्वेश्चन, P इक्वल टू 250 माइनस 2Q एंड मार्जिनल कॉस्ट इज कांस्टेंट एट 10। अब इसको पहले कोऑर्डिनेट मॉडल में निकालिएगा। कोऑर्डिनेट मॉडल का बस आंसर बताना आप। टोटल क्वांटिटी कितनी आई थी? 80। ठीक है, टोटल क्वांटिटी 80 थी और प्राइस 90 है। मैं यहाँ डेड वेट लॉस कैलकुलेट कर रहा हूँ। हाफ इंटू डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, सो इट विल बी कोऑर्डिनेट मॉडल की क्वांटिटी, मतलब परफेक्ट कंपटीशन की क्वांटिटी माइनस कोऑर्डिनेट मॉडल की क्वांटिटी, जैसे लिख सकते हैं, इनटू कोऑर्डिनेट मॉडल का प्राइस माइनस प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो हाफ इंटू perfect competition quantity you have to calculate first. Under perfect competition we equate price with MC, so it will be 250 minus 2Q equal to 10. So how much is quantity? 240 by 2, 120, and price is equal to MC, 10. So perfect competition quantity is 120, monopoly quantity is 80,
Perfect coordinate model price is 90, competitive price is 10. This value is dead weight loss. How much? 40 and 80. $1600. Dead weight loss will be 1600 here. This still question अभी नहीं हुआ. Both केस में बताने को कहा गया dead weight loss. This is dead weight loss under coordinate model. This is dead weight loss under coordinate model. And how much is dead weight loss under cartel? So what will the price and quantity in cartel? P और Q की वैल्यू बताइए. Price was 130 and quantity was 60. Therefore, dead weight loss in this case is half into difference of quantity into difference of price. So quantity is 60 and this competitive quantity was 120. Gap of 60 and price gap is 10 here and 130 here. 120. So it will be 3600. क्वांटिटी 120 कंपटीशन वाली है और मोनोपोली में 60 है, तो क्वांटिटी का गैप 60 हो गया और प्राइस का गैप 120 का हो गया. सो 120 इंटू 60 बाई 2, 3600. इतना सब कुछ काम करोगे अगर करेक्टली तो 5 नंबर मिलते हैं. ठीक है, मतलब पार्ट्स होते हैं वहां क्वेश्चन में ज्यादा, तो आप ऐसे कई क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के अंदर मिलेंगे. 14 में, 13 में मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ जिसके बेसिस पे आप उसको अप्लाई करना. यू कैन अप्लाई दिस क्वेश्चन इन 2013 क्वेश्चन नंबर 7th B. वहाँ फंक्शन गिवन है 160 माइनस 2p और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू गिवन है 2. ठीक है, और बेस्ड अपॉन दैट अगेन इट इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. बेस्ड अपॉन दैट देयर आर 3 सब पार्ट्स. उस क्वेश्चन में ये 3 सब पार्ट गिवन है. व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी फॉर टू फर्म इफ दे एक्ट एज coordinate competitor? So in coordinate competitor what you have to do? Best response of firm 1, best response of firm 2. दो इक्वेशन आ जाएंगे, इक्वेट करके सॉल्व कीजिएगा. What are profit maximizing price and quantity for firm if they act as Burton? तो Burton वाला भी सॉल्व नहीं कर रखा है, you can leave that part. What are the output level for the two firm if firm 1 act as Stekelberg? मतलब इस क्वेश्चन में तीनों मॉडल हैं, कोऑर्डिनेट भी है, बर्टन भी और स्टेकलबर्ग भी है. ऑल 3 in 1 क्वेश्चन. हाँ, ये सब क्वेश्चन नॉर्मली 8 मार्क्स के होंगे. तो अब जितना पार्ट आपसे सॉल्व होता है कोऑर्डिनेट वाला है, उस कोऑर्डिनेट वाले पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हो. 13 के क्वेश्चन प्लस आई विल एक्सप्लेन वन मोर थिंग हियर. व्हाई दैट इंटरसेक्शन इज बेसिकली रिपेंटिंग द Nash equilibrium. You can relate it in this form. Remember in that plotting, response curve of firm 1 was steeper and response curve of firm 2 was flatter. This is best response of firm 2. On axis you write here Q1 and Q2. This is the point of intersection and this is referred as फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये हमारा कोऑर्डिनेट नैश इक्विलिब्रियम है. द रीजन फॉर दिस नैश इक्विलिब्रियम इज दिस. एक्सप्लेन फ्रॉम दिस डायग्राम फर्स्ट. जस्ट फोकस हियर. इफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय फर्म इज लेस देन Q1 स्टार, देन व्हाट विल हैपन? जस्ट फॉर एग्जांपल, ये क्वांटिटी बन रही है तो बोथ आर डूइंग देयर बेस्ट. अगर हमने फर्म 1 की क्वांटिटी को Q1 स्टार से कम मार्क किया यहाँ पे, द क्वेश्चन इज if quantity produced by firm 1 is this Q1, how firm 2 will react?
firm 2 will react according to its own reaction curve, because that reaction curve is the best response curve. So given this quantity produced by firm 1, firm 2 will react according to its own reaction curve. वो firm 2 का reaction curve है. So if quantity produced by firm 1 is Q1, then quantity produced by firm 2 will be this Q2. Now process if firm 2 is producing this quantity, just think how firm 1 will react in the next period. If firm 2 is producing Q2, how firm 1 will react in the subsequent period? According to his own response curve. So if firm 2 is producing Q2, in the next period firm 1 will react by producing more. So firm 1 will react in the subsequent period by producing more quantity. If this is the quantity produced by firm 1, how second firm will react in the subsequent period? According to its own reaction curve, then quantity will be this. Given that quantity, how first firm will react? According to its own reaction curve. So this process will continue till you reach that equilibrium point. If you reach that equilibrium point, it means if firm 1 is producing Q1 star, firm 2 will do its best by producing Q2 star, and if firm 2 is producing Q2 star, firm is also doing its best by producing Q1 star. So both are doing their best. So since both are doing their best, no one will prefer to change their quantity. In that context, it is called a Nash equilibrium. So Nash equilibrium is basically used for those outcomes where both are doing their best given the strategy of the other player. Given the strategy of the other player. Nash equilibrium is basically, you can define that Nash equilibrium. Nash equilibrium is referred as a set of strategy. Nash equilibrium is referred as a set of strategy. Set of strategy where both firms, game theory में उसको player बोल देना firms को, where both firms are doing their best. Both firms are doing their best. Both firms are doing their best given the strategy of the other player. Given the strategy of the other player. Given the strategy of the other player, therefore no firm will deviate from that strategy. 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 ठीक है, इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस के लिखेगा 2016 क्वेश्चन नंबर 7th ए पार्ट. जितने पार्ट्स बन सकते हैं उतने पार्ट्स आप पहले सॉल्व करोगे. उस क्वेश्चन में फंक्शन ही गिवन है. Q इक्वल टू 240 माइनस 10p. पहला काम याद रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये फंक्शन जब Q के टर्म में गिवन होता है तो फर्स्ट ड्यूटी इज P के टर्म में लिखो आप. ठीक है, मतलब P के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कीजिएगा. P इक्वल टू दिस इनवर्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हियर इज 0. If two corner duopolies serve the market, then derive their reaction curve and find how much output they will produce and what will be the price. So first you can solve coordinate model है zero cost के basis पे. If the first duopolies act as Stekelberg leader, ये Stekelberg leader का हो गया. जब Stekelberg करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा. If the market was served by n identical firm, मतलब जनरलाइज कर लिया हमने, दो फर्म की जगह n नंबर ऑफ फर्म है, then how much quantity will be produced. उसका एक प्रूव होगा, इस बुक में अलग जब चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे फॉर n नंबर ऑफ फर्म. बट जस्ट रिमेंबर फॉर n नंबर ऑफ फर्म व्हाट विल हैपन दैट इट विल ऑलवेज बी 1 अपॉन n प्लस 1. फर्म की जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी? 1 बाई n प्लस 1. मैंने एग्जाम्पल में कितने फर्म लिए थे? 2 लिए थे. कितनी क्वांटिटी आई थी? 1/3 ऑफ द कॉम्पिटिटिव आउटपुट. 3 होंगे तो 1/4 हो जाएगा. One firm produces
1/n+1. So market will produce n से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ फर्म से, 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ 2/3 हो जाएगा. This will be firm's quantity and for market it will be n/n+1, that will be 2/3. n की वैल्यू 2 लिखिए. ठीक है, इसका एक प्रूफ होगा, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे. 15 n नंबर ऑफ फर्म है. अगर हमने 2 फर्म लिए हैं तो if I will take 2 firm then it will be 1/3 each firm and 2/3 total. ठीक है, ये 15.3 एग्जाम्पल के अंदर भी है. नेक्स्ट क्लास के अंदर ये एग्जाम्पल वाला केस भी होगा और बाकी क्वेश्चन भी आ जाएंगे सॉल्व में. ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको कॉर्नर मॉडल के मिलते हैं, वर्कबुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो. पास्ट पेपर वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए. वेरिएंट वाले क्वेश्चन भी मैंने लगा रखे हैं, वो भी सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, कंटिन्यू फ्रॉम दिस.